Once again, good morning. Still, I thought I seen my voice, so still not to close. So still, let's start second session. Our second speaker is already here. I could see a lot of Gen Z vibes in it. You can see his earring, double S in name. So I wanted these few things. So I curiously asked him. So, but as a speaker, maybe by name or vibes is a Gen Z kind of vibe, but while you listen to him, he's not a Gen Z, he's a veteran in this topic. So bringing again from the direct tax series for new act, so he's covering NRI taxation. So before inviting our second speaker, just inviting Seemaji to give a brief introduction of our learned speaker. Thank you, Lalitji, for giving me to introduce today's learned, versatile speaker, CA Vyomessh Pathak. I'm going to read his full biodata because it is very interesting. 15 years with KPMG, Associate Director, Corporate and International Tax, extensive experience in advising multinational companies on complex tax matters. He led tax litigation at Capgemini, headed the direct tax and transfer pricing litigation team, now in independent practice focusing on direct and international tax litigation and advisory. TEDx speaker spoke on various topics, use of AI in tax litigation. Author and co-author of Compendium on International Tax, published by Chamber of Tax Consultants, co-author of books on ICDS, published by CTC. Leadership and representation, he served as a Vice President of Law and Representation Committee of CTC for 4 years. He is an eminent speaker and trainer. He delivered 750 plus sessions at ICI, CTC, GCS, KPMG Tax Academy, and more. Regular trainer for IRS and income tax officers at National Direct Tax Academy. He's a mentor with CA Monk and ICI for qualified chartered accountants. Friends, with this, he is also spiritual sciences expert, professional numerology, Rudraksha and Vastu coach cum consultant, has guided hundreds of students and clients. Along with the international consultant, he is also guiding the means from spiritual point of view. Rudraksha expert supplies high quality authentic Rudraksha to clients across the globe. Recognized for exceptional contributions in the field of numerology. Author of books Miracles of Rudraksha, Mystical Insights, published in both English and Hindi. Content creator, runs a popular YouTube channel to disseminate knowledge of numerology, Rudraksha and Vastu, uplift life, relationships and careers. Means with this international taxation, FEMA, AI in tax litigation, he is also expert in spiritual sciences. So we are very lucky to have such a learned speaker with us. With this brief introduction, I request all past conveners to give a small moment of
चलो, shall we start? Good morning, everyone. आवाज नहीं आया. Good morning, everyone. बेटर बेटर. थोड़ा ब्रेकफास्ट का एनर्जी दिखना चाहिए. चलो, great. Welcome everyone once again. And first of all, thank you, Lalit ji, the convener, and Vijay madam and team. And for me, JB Nagar is equal to Seema madam. With due respect to all present and past conveners, because I think when she was a convener, that was the first time when I had come to JB Nagar, and I think from then almost every year I have been coming to JB Nagar. Last year शायद gap हो गया था, but otherwise all the years and month भी जून जुलाई होता है. I think बारिश का मौसम ही होता है. So I think it's a ideal combination, rains and JB Nagar for me. And topic also NRI taxation. And of course, now we have Income Tax Act 2025 also. So, how many of you practice in international tax? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, approximately 10-12 jan. So, there is a new law 2025. If I go anywhere wrong, I need your support. ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं, टेंशन for others. ठीक है? Because what happens is, मेरे दो favorite topics है when it comes to practice also and when it comes to seminars also. One is litigation, which is my bread and butter, and second is NRI taxation also, which is my bread and butter with cheese. So what happens when it comes to these two topics is even chartered accountants get afraid. Arey litigation, arey CIT appeal, arey IDAT. Now if I ask how many of you practice at tribunal level, देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 out of 200 plus we have only 7 to 10 people practicing before ITAT. And I believe these are the only two avenues, litigation and NRI taxation, जहां पे पैसा है. You agree? रिटर्न फाइलिंग में पैसा मिलने वाला है नहीं. अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको बोलता है तुमने क्या बेचा क्या लिया, अरे मैं तो भूल गया था, राइट? When it comes to NRI taxation, all of a sudden your NRI client or NRI friend, whosoever calls you suddenly, अरे मेरे को नोटिस आ गया, क्या किया था? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया. कुछ नहीं किया तो नोटिस कैसे आया? कुछ तो किया रहेगा. कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो इंडिया आया ही नहीं, मतलब फिर नोटिस कैसे आया? पिछले साल एक घर लिया था. अरे पर वो पिछले साल था, अभी क्यों है? तो पिछले साल का ही नोटिस आया, राइट? कुछ नहीं किया फिर भी नोटिस आता है. सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज टुडे, एंड पीपल गेट फ्राइटेंड, पीपल गेट, डर जाते हैं लोग. शर्लॉक होम्स फैन एनीवन हियर? शर्लॉक होम्स, राइट? तो एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए. सो वंस एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन केस सॉल्व करने के बाद वीकेंड था. शर्लॉक होम्स एंड वॉटसन, his good friend come assistant come whatever, partner in crime and partner in investigation, they both go for a picnic, overnight picnic जाते हैं, कैंपिंग करते हैं. बोला चलो मानसून है अच्छा खासा, हम मानसून कैंपिंग पे जाएंगे. सो दोनों जन मस्त कैंपिंग पे जाते हैं, खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं. अचानक से 3 बजे शर्लॉक होम्स रात को नींद खुल जाता है, वेक्स अप, वॉटसन को उठाता है. हे वॉटसन, वेक अप, व्हाट हैपेंड? लुक एट द स्काई, सो ब्यूटीफुल. क्या दिख रहा है? अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई, स्टार्स आर गेजिंग, ब्यूटीफुल मून. शर्लॉक होम्स से, बॉस वेयर इज आवर टेंट?
हम जिधर सो रहे थे वो टेंट गायब है, तंबू गायब है. So what happens is when we deal with either litigation or international tax, we forget about the basics. जो immediate था वो तो गायब है, सीधा ध्यान जाता है, अरे चांद तारे दिख रहे हैं, अरे भाई हम जिसके नीचे थे हमारा शेल्टर गायब है. We forget about the basics, right? So similarly, when I started my journey way back in 2009, excitement में NRI taxation, international tax was very new to me. एक एक्साइटमेंट होता है कि हम सीधा टैक्स ट्रीटी पे चले जाते हैं. रॉयल्टी एफटीएस आ गया, चलो आर्टिकल 12. एक ही पता था अपने, आर्टिकल 12 डील्स विद रॉयल्टी एफटीएस, तो कुछ भी हुआ तो सीधा आर्टिकल 12 खोल के देखने का एक्साइटमेंट ना. इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ के थक गए थे बचपन में. बट बेसिक लाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर इट इज टैक्सेबल इन द एक्ट और नॉट. यस और नो? एक्ट में टैक्सेबिलिटी के लिए सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट. एनआरआई टैक्सेशन आएगा या लोकल टैक्सेशन आएगा. दैट इज द बेसिक वेयर वी स्टार्ट. बट दिस इज व्हाट वी फॉरगेट. बड़े हो जाते तो ऐसा लगता है यार छोटी मोटी चीजें कौन देखता है. बट आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स. चालू है क्या? I always start with the basics, which is residential status. Fortunately, unfortunately, old act section 6, new act section 6, nothing changes. Section number also doesn't change. As far as residential status is concerned, only the concept changes. हमारे पास पहले फाइनेंशियल ईयर था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया टैक्स ईयर. कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, तो फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर कर दिया, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. So let us recap quickly. Residential status, we have resident as far as individual is concerned, resident, non-resident. Within resident, we have two baskets, ROR, resident and ordinary resident, and RNOR, resident but not ordinary resident. What do we mean by this? The provisions. Basic condition, very simple, 182 days or more in the current financial year. If I am in India for 182 days or more, I am a resident. Simple. But if I don't satisfy 182 days, the second condition is a twin condition, 60 days or more during the relevant financial year, now the tax year, plus 365 days or more in the 4 of the preceding years. So suppose if I am looking at residential status for 2026-27, I have to be in India for 60 days in 26-27 और उसके पहले के 4 साल, that is 25-26 and previous 3 years, वो सब मिला के I have to be in India for 365 days or more. If I satisfy both of these conditions, I am a resident. There is one star, one asterisk there. We go down. 60 days is getting replaced by 182 days. In the year of departure for Indian citizens leaving India for employment. जो इंडिया से बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, for them 60 days is getting replaced by 182 days. So effectively, if I am going out of India for the purpose of employment, same basic condition जो है वही अप्लाई होगा. तो 182 days से कम में इंडिया में हूं तो I am a non-resident. 60 days gets replaced by 182 days. दूसरा ऑप्शन है in the year of visit. This is also important. This is for Indian citizens and PIO, person of Indian origin. जिसके पास person of Indian origin का या OCI कार्ड है, who is of Indian origin. What do you mean by PIO? Whose grandparents from either of the side are born in India. Undivided India भी चलेगा पहले बार, right? So there also 60 days is getting replaced by 182 days. ठीक है? Additional conditions for ROR. 2 out of 10 financial years preceding the relevant financial year. मतलब current year छोड़ के पिछले 10 साल में से 2 साल I have to be resident in India to be a ROR, plus present in India for 730 days or more during 7 preceding financial years. So 730 days or more I have to be in India to become a ROR, resident and ordinary resident. If I don't satisfy either of these conditions, I am not ordinary resident. Now changes. हालांकि 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, but this is relevant. Now what people used to do is they used to plan their residential status. How do we plan my residential status? 182 days है for the purpose of employment outside India. I go outside India for the purpose of employment. ठीक है?
I stay in India for 170, 175 days, 182 से कम. But my everything is in India largely. But I say I am going out of India for the purpose of employment, and therefore I don't pay taxes in India. Somewhere government realized this loophole. हम में से किसी ने एडवाइस किया रहेगा, गवर्नमेंट को नहीं, क्लाइंट्स को, कि we will help you plan your residential status such that you are a non-resident in India. गवर्नमेंट ने पकड़ लिया. What they say कि ये विजिट वाला जो केस है, Indian citizen or VIO being outside India comes to India on visits, residency triggered with reduced period of 120 days. जो बाहर है, जो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में आते हैं पेरेंट्स को मिलने, फ्रेंड्स को मिलने, ऑपरेशन कराने, राइट? इंडिया इज नाउ अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म आल्सो. सो इफ यू आर इन इंडिया फॉर 120 days or more and your Indian source income other than foreign source income, मतलब Indian source income is 15 लाख से ज्यादा, more than 15 lakhs. If both these conditions are satisfied, then you are a default resident. कौन सा resident? Not ordinary resident. ROR नहीं होंगे. You will be NOR, not ordinary resident, right? Citizens of India not liable to tax in any other country. अभी ये भी लोग प्लान करते हैं. Citizens of India, they plan in such a way, कहीं भी मेरा रेसिडेंसी ना हो. I keep hopping countries such that I am not a resident of any country. कहीं भी टैक्स नहीं भरूंगा. तो वहां पे भी by reason of his residency, domicile or similar criteria, he will be resident in India. So these are the two exceptions which have been created to plug the loophole of people who are planning their residential status. Right? Gross income or taxable? Taxable. Taxable. हाँ जी. I have a company in Singapore. हाँ. Then I have 3% owner shareholder. And now director. Correct. I'm going to Singapore staying for a days and taking $1 per month as a salary. So what if you this criteria will apply? Then because I'm an employment for them. 182 days will apply. If you are in employment, then 182 days will apply. But I am owner also. That is okay. Yes. You have to showcase that you are an employee also. Right? So, one, yes, sir. जॉब के लिए नहीं जाके एजुकेशन के लिए जाते हैं. हाँ. फिर वहाँ जॉब पढ़ने लग जाते हैं. I have a case study on that. Exact example I have. चलो आगे बढ़े. Shall we move ahead? So this is how it is. 120 days in these two cases. So this is the entire snapshot. What we just discussed. Case studies with examples. Mr. A, who is a business head for Asia Pacific region of an MNC, India में है. He has to travel to various locations for business purpose. He has spent 200 days traveling in financial year 25-26. Also, he has been traveling abroad from the past 2 years and has stayed out of India for 400 days in this period. Whether he is a resident or non-resident. मेरा काम हो गया, अब आपका काम शुरू. मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अभी आप अप्लाई करो. हाँ जी. He has spent 200 days, so 365 में से 200 तो चला गया. लीप ईयर था नहीं. So 165 days he was in India. बाद में दूसरा क्या है? 2 साल से वो बाहर ही है. And stayed out of India for 400 days in this period. So whether he is a resident or non-resident. हाँ जी. Resident, non-resident. 15 लाख भूल जाओ. Not applicable. In this case, 15 लाख भूल जाओ. Basic criteria. NOR. How many of you say NOR? 1, 2, 3, 4, 5. How many of you say ROR? 1, 2, 3, 4, 5. How many of you say NR? Balancing figure? No idea. Chalo, let us look at it condition by condition. Basic condition 182 days, not satisfied.
दूसरा कंडीशन 60 days or more satisfied, 365 days or more in immediately preceding 4 years satisfied, क्योंकि 2 साल में बाहर इसमें से 400 दिन है तो बाकी के 2 साल 365 into 2 तो ही वो दिन इंडिया ओनली, सो 365 एक ही साल में सेटिस्फाई हो गया मेरा. So I am satisfying the second condition to become a resident. Additional condition for ROR 2 out of 10. मैं 2 ही साल बाहर था, 2 ही साल बाहर था मैं, राइट. सो देयरफॉर बाकी के सारे साल I was in India. 730 days also satisfied. So therefore I am an ROR. ROR वाले कितने थे? 1 2 3. इनके लिए जोरदार तालियां. जाग रहे लोग, ठीक है. नेक्स्ट मजा आता है. ये सर का एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा था. मिस पू वेंट टू लंदन टू ज्वाइन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी फॉर अ ग्रेजुएशन कोर्स. 3 साल पढ़ने के लिए गए. उसके बाद प्रोफेसर को उसका पढ़ाई अच्छा लगा तो बोला आप पोस्ट ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर लो यहीं पे, वापस मत जाओ. सो सेम यूनिवर्सिटी शी डिड पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी फॉर 2 more years. 3 और 2 5 साल हो गया, गिनते जाओ, ठीक है. शी हैड to get an internship certificate to complete the course. Upon completion the firm offered her a permanent position. So internship भी किया, बाद में permanent position मिल गया वहीं पे. She has been an employee there for past 4 years. Count करो, 3 2 5 4 9. That is Miss Poo has stayed out of India for 9 years now. She receives rental income from the property where she had inherited from her parent. वो इंडिया में समझो 15 लाख से कम है. सिंप्लिसिटी 15 लाख वाला केस स्टडी बाद में लेंगे, ठीक है. तो अब बताओ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट. सिंपल है, राइट. रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज, वो आई नहीं इंडिया 9 साल से. 182 डेज नॉट सेटिस्फाइड, 365 नॉट सेटिस्फाइड, 9 साल इंडिया के बाहर है, राइट. सो देयरफॉर both the conditions are not satisfied. और यहां पे because she is in employment 60 days will get replaced by 182 days. थर्ड केस स्टडी अब यहां पे आता है 15 लाख पे. मिस बी a person of Indian origin reside in Canada and doing job visits India regularly to meet her parents. She visits India to meet her parents. During last year, that is financial year 25-26, her stay in India was more than 120 days. 135 days से ज्यादा, 135 days था, that is more than 120 days. She earns dividend income and interest income from her investments, which is 16.5 lakhs. 1.5 million से 15 लाख से ज्यादा है. अब बताओ ROR, RNOR और NR. NOR सिंपल, 15 लाख से ज्यादा है. I fall in the exception. फाइनेंस एक्ट 2020 वाला. बेसिक कंडीशन 182 डेज नहीं 120 डेज. 1.5 मिलियन 15 लाख से ज्यादा है, दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड. सो देयरफॉर शी विल बी अ NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है. सो वंस वी आर डिसाइडेड कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, फिर जाते हैं भाई कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा. यस मैम. This one, year 1, when I am going outside India for the purpose of education, I will be a resident. Because assuming for the prior period I was in India only, I am going outside for the very first time for education. Yes, then 182 days. Was to do studies, but if I can prove that I am doing internship and I can get some documentary evidence of employment also, then I can very well argue that I am going for employment. Yes sir. That is क्या provision से परसेंट के लिए तो अदर कंट्रीज में वो टैक्स भी नहीं भरते because रेसिडेंशियल स्टेटस रहता है डिफरेंट कंट्रीज का. So in that case, so not deemed to be exceptions will be covered by other residents. So for person on crew also 182 days applies. The exception of 182 days applies to them also.
But sir, 120 days वाला provisions and 120 days only for a person who is permanently residing outside and only comes to India for visits. तो 120 इनको applicable नहीं होगा, इनको 182 days ही applicable. so in that case 120 तो इधर भी tax रहेगा. हाँ, ठीक है, but that is because of their job. They are not planning it. Okay. So idea is to curb tax planning. Take up a pilot. Same, pilots and member of crew. So it is the same thing. So if a person residing in Canada and comes India. Yes, visit. Visit. So that 120 days doesn't. वहां पे 120 days will apply. हाँ जी सर. What happened to a person come back in financial year in a job and come back? Correct. Permanently. Yes, permanently. What happened? Then basic conditions are applicable to him. That is 60 days or more. The first basic condition. First condition is 182 days or more. Assuming he is outside India for 10 years, 15 years, whatever, and he is coming back for the first time after 10, 15 years, he will still be a non-resident in the first year. Because he will not satisfy 182 days, assuming he will not satisfy 182 days, but if he satisfy 182 days, he will be a resident. No. Once he crosses 182 days, he will be a resident. And the income what he has earned Outside India will be taxable. Assuming April to June, I was in US or Canada, wherever. June I come back. That amount of April to June which I have earned outside India also will be taxable in India, because once I am a resident, my global income will be chargeable to tax. So everything, whatever he receives in that year will be taxable. So he has to plan his return to India very judiciously. Yeah. But he said for visiting India, it stays more than money he pays. But for earlier years, he was a resident for 10 years, 15 years. That is not ordinary. Sorry? He stays for in India for more than money he pays. Correct. Yeah. But in earlier 10 years, more than that. Then he will be RNR. Yeah. And then global income will not be. No, not in that case. Not in that case. for example, So his point is very valid. He's saying 730 days and 2 out of 10 years also has to be satisfied for becoming a resident and ordinary resident. So in this case, that assuming you are not in India for not coming to India regularly, and you don't satisfy 2 out of 10, you don't satisfy 730 days or more, you will be an NOR. You will be an NOR, and there we'll see what is the taxable income. Yes, because additional conditions for ROR has to be satisfied. Ah, 15 lakh you have to see only in the current year, not in the earlier years. No, for ROR, you have to satisfy both these conditions, that is 2 out of 10 and 730. No. Non-resident in that case. Yes. Yes. Correct. Now scope, what is taxable, what is not? Okay, I'll just come to the core of it. For resident, as I just said, global income will be chargeable to tax. For non-resident, only income received or deemed to be received or accrues or deemed to accrue or arise in India will be taxable. So this is the crux of it. ROR, global income. NOR, income sourced from India, income received or deemed to be received in India, income derived from business, control or profession set up in India. That is NOR. What changes between NOR and NOR is also important. The third bullet, ये जो है, income derived from business, control or profession set up in India is taxable only for NOR and not for NR. NR के हाथ में दो ही चीज taxable है, income sourced from India and income received or deemed to be received in India. This one, this leg is taxable only for NOR. Right? What do you mean by income deemed to accrue or arise? This is main. जो received है वो तो हमको पता है, जो deemed to receive है वो हमको यहाँ पे deemed to accrue देखना है main.
Section 911, right? Now, 911 is Income Tax Act 1961. Income Tax Act 2025, section remains 9, but 11 के जगह पे it is now 92. It is now 92. All income accruing or arising directly or indirectly through or from business or profession in India. Through or from India. Business connection, property, asset, source of income, and transfer of asset, transfer of capital asset, indirect transfer. We'll come to this example also. ठीक है? So if you have a business connection in India, a property in India, जहां से आपको rent मिल रहा है, ठीक है? Asset in India. So assuming if you have a property in India, जिसका आपको rent मिल रहा है आपके overseas account में, even if you are receiving rental income in your overseas bank account, even then it will fall here, property 92. Now 92. I am not talking about 911 now because now we are in 2025 Act. Then salaries earned in India 912 का हो गया अभी 93. 912 is now 93. Salaries payable by government, that is also 93. Dividend 914 था, अब 1 निकल गया, सीधा 4 बचा है, वो भी नॉर्मल वाला हो. 94 is dividend, 95 is interest, 96 is royalty, and 97 is fees for technical services. Only section reference changes, that is subsection reference changes, rest all concepts remain the same. Only income attributable to India shall be deemed to accrue or arise in India. Now what do you mean by indirect transfer? ये तो हमको पता है. Property इंडिया में है, अभी rental income हमने discuss किया. Asset इंडिया में है, it is okay. Source of income in India, this is okay. What do you mean by this? Transfer of a capital asset situated in India. That is this. All income accruing or arising directly or indirectly through or from business connection, ये तो हमने अभी डिस्कस किया. सबसे पहले तो ये जो लास्ट लेग है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? Capital asset being any share or interest in a foreign company shall be deemed to be situated in India if such share or interest derives directly or indirectly its value substantially from assets located in India. You remember what happened Supreme Court? Right? Transfer of companies shares which is situated outside India. जिसका शेयर बिक रहा है वो भी बाहर है, जो बेच रहा है वो भी बाहर है, जो खरीद रहा है वो भी बाहर. बट गवर्नमेंट सेड कि बॉस यू हैव सब्सटेंशियल वैल्यू इन इंडिया, सो देयरफॉर आपने अल्टीमेटली वोडाफोन इंडिया बेचा है, सो देयरफॉर यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया. मैटर वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सेज बॉस नथिंग डूइंग, you don't fall in any of these criterias because you don't have business in India, both are out overseas, you don't have property in India, you don't have asset in India, you don't have any capital asset in India. Supreme Court said nothing doing, not taxable. उसके बाद एज यूजुअल जो इंडिया में होता है अमेंडमेंट नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. अमेंडमेंट तो ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1976. Retrospective with effect from 1976. ठीक है? So there they are saying कि boss, even if you are playing outside India, तुम बाहर मैच खेलो, बाहर बेचो, जो करना है करो, अगर substantial value इंडिया में है, substantial मतलब more than 50%, we'll come to that. Then also सब कुछ बाहर है फिर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. सब कुछ बाहर है फिर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है? सो बिजनेस कनेक्शन तो 911 में है, 92 हो गया. अभी जो इंडियन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा भाई, इंडियन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा भाई, इफेक्टिवली तुम कुछ भी इंडिया में करो तुम्हारा 92 ट्रिगर हो जाए. कुछ भी करो इंडिया में 92 ट्रिगर हो जाए. यहां पे फिर हमको ट्रीटी में जाना पड़ेगा टू सेफगार्ड. हैज in India and equivalent to permanent establishment, it has wider scope and has been used extensively by revenue authorities to tax the income of non-resident. The basic concept is that non-resident person should be liable to tax for profits earned in India if he has real and significant and intimate connection to India or substantial economic nexus.
The term is significant for international transactions. Business connection is very wide. If you don't have a treaty protection, your any business transaction can get triggered here. Essential features: real and intimate relation must exist between the business activities by a non-resident carried on outside India and activities within India. The relation contributes directly or indirectly to the earning of income by non-resident in his business. A course of dealing and continuity of relationship. Continuity of relationship. And not merely isolated or strain excess. ठीक है? Business connection includes, देखो क्या क्या आता है. Any business activity carried out through a person who habitually exercises in India authority to conclude contracts on behalf of non-resident or habitually plays a principal role. ये बाद में ऐड हुआ MLI आने के बाद. Habitually plays a principal role leading to conclusion of contracts. अभी कोई एजेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई अपॉइंट एन एजेंट, आई एम अ नॉन रेसिडेंट, आई अपॉइंट एन एजेंट इन इंडिया हु डील्स ऑन माय बिहाफ. पहले तो साइन भी वो एजेंट ही करता था कॉन्ट्रैक्ट एक जमाने में. फिर जब पता चला, ये नया चेंज आ गया, गवर्नमेंट को पता चला कि बॉस ये साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पकड़ना चालू किया कि बॉस यू आर एन एजेंट इन इंडिया, यू आर अ डिपेंडेंट एजेंट, देयरफॉर इट इज बिजनेस कनेक्शन एंड देयरफॉर टैक्सेबल. तो एजेंट ने क्या किया, साइन करना बंद कर दिया. मैं साइन नहीं करेगा, साइन इधर से लेगा, साइन ओवरसीज क्लाइंट करेगा, बट करेगा सब कुछ में ही. व्हाट चेंजेस, आई विल स्टॉप साइनिंग, आई विल नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट. उतना ही चेंज किया. देन गवर्नमेंट रियलाइज कि बॉस ये तो और चीटिंग है कि तुम सब कर रहा है, सिर्फ साइन नहीं कर रहा है. So therefore this next amendment or next change came that or habitually plays a principal role leading to conclusion of contracts by that non-resident and that contracts are in the name of non-resident. जैसे कि मैंने बोला contract non-resident sign करेगा. For the transfer of ownership or for granting the right to use property owned by that non-resident or the non-resident has the right to use for the provision of services by non-resident. ये एक condition हो गया. You can easily fall here. दूसरा, maintains in India stock of goods for which he regularly delivers goods on behalf of non-resident. Last but not the least, secures orders in India mainly or wholly for the purpose of non-resident or other non-resident subject to common control. उस ग्रुप के लिए ही आप काम कर रहे हो तो भी आप बिजनेस कनेक्शन में फॉल हो जाओ. एक्सक्लूजन 2A, ये पहले था for activities limited to purchase of goods in India. If I am just purchasing the goods on behalf of non-resident, so this was an exception कि आप बिजनेस कनेक्शन में फॉल नहीं हो. अब वो भी डिलीट कर दिया. मैं सिर्फ परचेस कर रहा हूं तो भी टैक्सेबल, तो भी बिजनेस इनकम, तो भी बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा. Business connection does not include any business activities carried out by a person having independent status. For example, I am working with 10 different non-residents who are unconnected. So I am independent agent. I am not a dependent agent. Dependent agent कौन है? I am working only for one client, one company, or the group companies of the same group. Then I become a dependent agent. Attribution in case of business connection for all the operations are not carried out in India, proportionate होगा. Suppose 50% business is in India, 50% outside India, तो 50% ये attribute होगा. 60% है तो 60% ये attribute होगा. Now all these discussions are very good, but when it comes to actual attribution, that is when मारामारी starts. How do you determine the percentage? How do you determine the sharing? Revenue sharing कैसे होगा? Exceptions: no income shall be deemed to accrue or arise in India in case of non-resident business. ये पहले था, which are confined to purchase of goods in India for export. ये अभी निकल गया. Non-residents running a news agency or publishing newspapers, which are confined to collection of news or views in India for transmission out of India. Individual firm or company whose operations are confined to shooting a film in India. Foreign company engaged in mining activities which are confined to display of uncut and unassorted diamonds. So basically this is for promotion of diamond activities in the SEZ in India. Case study. देखो example. Mr. X, an assessee, carries on business as an importer and as a commission agent of a non-resident exporter. For two of the non-resident exporters, he canvassed orders for supply of woolen yarn and communicated the same to the non-residents and received commission on the sale made by him. Mr. X had no authority to accept any order on behalf of non-resident
The non-resident was not obliged to accept the order procured by Mr. X. The orders were accepted, price received, and delivery of goods was given by non-resident outside India. In this case, whether can you say Mr. X is the agent of non-resident and the non-resident has a business connection in India? Yes or no? No, right? Simple. No business connection. R.D. Agarwal, Supreme Court. Second case study. ABC International of Netherlands used to import iron and manganese ore from India, being dissatisfied with the activities of Indian exporters from whom it made purchases. It appoints Mr. A as its representative in India. Mr. A क्या करता है? Supervises the correct execution of contracts of ABC with Indian exporters as to quality, quantity, time of delivery, transport, etc. A's activity involved, this is important, procurement of raw material and ensuring regular and proper supply of raw materials. A used to get remuneration from ABC. Clear case of business connection? Yes. Right? Bombay High Court, Blue Star. अब आते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे. अब आते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर. ठीक है. ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ आर आउटसाइड इंडिया. कंपनी जिसका शेयर बेचा जा रहा है एसपीवी, दैट इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, टिपिकल वोडाफोन. उसके नीचे एक इंडियन कंपनी है आईको. व्हेन दिस ट्रांजैक्शन गेट्स ट्रिगर्ड इन इंडिया, एसपीवी शेयर्स deemed to be situated in India, SPV shares deemed to be situated in India if, what are the conditions? Value of ICO, value of Indian company is 10 crores or more. Indian company का value 10 करोड़ से ज्यादा है and value of ICO is more than 50% of the value of SPV. जिस कंपनी का शेयर्स बेचा जा रहा है उसका वैल्यूएशन करो और इंडियन कंपनी का वैल्यूएशन करो. अज्यूमिंग एसपीवी का वैल्यूएशन है 100 करोड़. अज्यूमिंग एसपीवी का वैल्यूएशन है 100 करोड़, 100 करोड़. सामने आईको का वैल्यूएशन है 60 करोड़. कितना? 60 करोड़, which crosses the 50%, which crosses the 50% threshold. Therefore, this will be considered to be deemed indirect transfer. Deemed indirect transfer. ठीक है. Assuming value of Indian company is 49 crores, is 49 crores और SPV का 100 crores. I am less than 50%. Indirect transfer does not trigger. Indirect transfer does not trigger. Twin condition 10 करोड़ satisfy हो रहा है आईको का, 49 करोड़ है, पर 50% satisfy नहीं हो रहा है. So therefore this will not constitute indirect transfer. ठीक है. Valuation will be as per balance sheet dates prior to the transfer. Date of transfer, if the book value of asset transfer more than book value on the balance sheet date by 15%. So you either consider the last balance sheet. अगर value में difference है 15% से ज्यादा, then you take the latest valuation. ठीक है. अब आप बोलोगे पता कैसे चलेगा? मैंने तो बाहर भेज दिया, पता कैसे चलेगा? तो वो भी ऑब्लिगेशन डाल दिया है आईको पे कि अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई हलचल होता है ऊपर के ऊपर, इंडियन कंपनी ऐसा नहीं बोल सकता मुझे क्या पता ऊपर क्या चल रहा है. नो, यू हैव टू रिपोर्ट इट. इसका ऑब्लिगेशन है इंडियन कंपनी. इफ यू डोंट रिपोर्ट देयर इज अ पेनल्टी. रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑन आईको सेक्शन 285A, अभी नया सेक्शन 256. If you don't report indirect transfer, you have to report. If you don't report, there is a penalty. कितना? 2% of transaction value if the change in management or control of ICO. ठीक है. Penalty is under section 506 now, 271G. ठीक है. 2% of the transaction value. Penalty पे कौन करेगा? इंडियन कंपनी. खाया पिया कुछ नहीं, right? Then coming to except exemptions, 9(2) में कुछ exemptions है. हाँ जी. Also money transfer takes place abroad. How the Indian government going to recover the tax? So effectively the worst part or the best part here is the transferor will have to pay the tax also and the transferee will have to deduct TDS also. That is the worst case scenario. उसको टैन लेना पड़ेगा, उसको पैन लेना पड़ेगा, दोनों को
क्योंकि पैन के लिए टैन के लिए पैन मैंडेटरी. So he transfer is obligated to deduct tax at source, to deposit the tax, and transferor also has to pay the tax in India and also file the return in India. That obligation is also there. Not done after the recover tax. हाँ जी, The government recover tax from the scope. ये है ना इंडियन कंपनी. Indian government recover करेगा tax. इंडियन कंपनी से रिकवर नहीं करेगा, रिकवर उनसे ही करेगा. कैसे करेगा? अगर इसने नोटिफाई नहीं किया, वो तो पेनल्टी के बाद हो गया. पेनल्टी हो गया. तो टैक्स लायबिलिटी है. हाँ, ट्रांसफर का वो कैसे कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट? सो दे विल गो थ्रू द इंटरनेशनल रूट. वो लंबा मारामारी चलेगा. हाँ, वो चलेगा. Practical difficulties and challenges, but now the ट्रांसफर inter country coordination is such that the information is transferred very swiftly. information comes. हाँ, कैप्चर कर बट कलेक्ट. हाँ वो है, मतलब that practical challenge can be there. वो है. Yes ma'am. So there is a particular form which is to be filed. There is a particular form which gives all the details, valuation and everything. 11 UA. What are the exceptions? If no Indian company, so basically suppose small share is being transferred, 50% share transfer नहीं हो रहा, छोटा मोटा ट्रांसफर हो रहा है, तो छोड़ दिया. छोटे मोटे प्लेयर्स को छोड़ दिया. कैसे छोड़ा? No income due to approval India if transferor बाहर वाला at any time in the 12 months period preceding the date of transfer holds in SPV no management or control or voting power और शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट लेस देन 5%. छोटा शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, उसको ये एक्सेप्शन. दूसरा, नो इनकम डीम्ड टू अक्रूर और राइज इन इंडिया इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 12 मंथ्स पीरियड नो मैनेजमेंट कंट्रोल. अभी मल्टीपल एसपीवीज है, बाहर के बाहर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है. ट्रांसफरर है, ट्रांसफर ये उसके नीचे एसपीवी 1 है, उसके नीचे एसपीवी 2 है और उसके नीचे आईको है. No management control either in SPV1 or no right in SPV1 that entitles him to management to control SPV2. Third, ये and है, ये तीनों condition satisfy होना चाहिए. And such voting power, share capital interest in SPV1 that results in voting power of share capital or interest is less than 5% of SPV2. So only in these cases where holding is less than 5%, you have a leeway, otherwise it is taxable in India if you satisfy 10 crores and 50% of DTAA section 90 now section 159 section 90 now section 159. How do I avail treaty benefit? The power is given to me in section 159 now. Central government may enter into an agreement with government of the country outside India, specified territory outside India. Okay? Income on which income tax has been paid, income tax chargeable. For avoidance of double taxation in India, for exchange of information, this is what I was saying, this is very swift nowadays. Investigation of invasion, avoidance of income tax, for recovery of income tax. For taxpayer to whom such agreement applies, the beneficial provisions of the treaty or the act, whichever is beneficial, apply. Okay? A treaty neither generates a tax claim that does not otherwise exist under domestic tax law, nor expands the scope of a tax claim. First of all, it is to be taxable in the local tax laws. ऐसा नहीं कि treaty की वजह से वो इंडिया में टैक्स हो जाएगा. No. Purpose of treaty is to avoid double taxation and also double non-taxation at times. But treaty की वजह से for the first time income cannot be charged to tax in India. जो domestic law में taxable नहीं, right? It has to be taxable under the act first. Then comes TRC. All of us know Form 10F. अभी हो गया Form 41. It has to be taken from home countries tax authorities. No specific format. So now we have to also provide Form 10F. Or 10F की जगह पे now it is Form 41, which has all these details: status, PAN, nationality, TIN number, period of validity, address of non-resident to keep and maintain documents which are necessary to substantiate above information, which may be demanded later on. This has to be filed online.
41 has to be filed online. Then coming to capital gains, again no change here. Period of holding remain the same. Period of holding remain the same. 12 months, 24 months, 12 months, 36 months. No change here, so I am not going into the details. सबसे important, land or immovable property 24 months. Listed shares, equity or mutual funds 12 months. Unlisted shares 24 months. Right? That's all. Tax rates, as far as long-term capital gain is concerned, now after the recent amendment, long-term is now 12.5%, right? And there is a limit of 1.25 lakhs for equity-oriented mutual fund and equity shares. Unlisted shares and securities again. So long-term capital gain, now it is 12.5%. Long-term capital gains, now it is 12.5%. Short-term, either 20% if STT is paid, जो पहले 15 था अब हो गया 20, or you go as per the slab rate. Non-STT cases में you go as per the slab rate. Very important is 12.5% for residential properties. Long term. पहले indexation मिलता था. Now there is no indexation. Only limited indexation benefit is that if at all there is a loss, you don't pay tax, but you don't get to carry forward the loss because of indexation. पहले क्या था कि indexation की वजह से मेरा अगर long term capital loss आ गया, तो I used to carry forward that loss. Now that is not there. Set out during the year also is not allowed. That is only for mechanical calculation purpose that you are allowed the benefit. Otherwise ना आपको loss set out करने मिलेगा, ना carry forward करने मिलेगा. एक simple house property का sale था, value of 1.75 crores. 1.75 crores. उसमें 40 lakhs का loss था because of the indexation benefit. 40 lakhs. Right? Gone. Live case. No loss being set off, no loss being carried forward. Nothing doing. Right? So you can replace the value of 2,000 value. That is possible. Only thing that indexation is not available. Right away, you Yes. pay tax. Yes. हाँ, 2 years. Yeah. Only Indian listed is where STT is applicable, that is 12 months, otherwise 2 years. So that is what judgment of tribunal, no, that where the mutual fund was not taxable because of the Singapore, there is no capital gain tax. And I'll come to that. TDS, ideally, it is on the gross wealth, technically. Yes. Yes. So technically it has to be on the 2 crores, but practically my tax liability is only on 50 lakhs. So in this case, I have to apply to the tax officer if I have to apply on the net basis. As a deductor, मुझे कभी-कभी दया आ जाता है यार 50 लाख ही taxable है पर मैं 2 करोड़ पे क्यों करूं? But then that obligation is on me. I am taking it on my head. So therefore, I have to apply. Technically speaking, I have to apply to the tax officer. Practically, many people what they do is they take chartered accountant certificate and they deduct on the 50 lakhs, which is wrong, grossly wrong. You may be held responsible as a deductor. Because what happens in this case is once you are a deductor, आपने डिडक्ट कर लिया, सामने वाला तो पैसा लेके चला गया. It will be very difficult for you to recover from him later on. जब भी नोटिस आए. Never take any chances on TDS. Yes, always. Otherwise, you ask him to obtain lower LDC. So it is not self-consideration, right? हाँ, self-consideration. Market value is more than the self-consideration. हाँ, This is your what value then? market value. If they deduct from self-consideration, it will be wrong. हाँ, so therefore you have to see that 56 to 10 also. Definitely. हाँ. So that calculation has to be taken care. Now the question here is, as far as tax treaty is concerned, there was one judgment which I was advocating since years. कि treaty capital gains article 13 talks about shares. What if I am selling mutual funds? I am a long-term investor. I am
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, मैंने वो बेच दिया। एंड आई हैव बीन एडवोकेटिंग अ पोजीशन कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स नहीं आएगा, यू कैन क्लेम ट्रीटी बेनिफिट बिकॉज द सब्सटेंशियल द लास्ट क्लॉज सेज एनी अदर एसेट taxable in the resident state. Now when you say any other asset which is not falling above, and when you see the list of assets listed above, it is either property, movable property, immovable property or shares. Mutual fund is not shares. अब गलती हो गया गवर्नमेंट से, I am not concerned. That is not my mistake. If you want, you include in the, you amend the treaty, which is again next to impossible. But the law as it stands, as far as treaty is concerned, mutual fund is not covered in shares. Shares is different, mutual fund is different. There are a couple of tribunal judgments also, Ahmedabad tribunal, Mumbai tribunal, which have categorically held that mutual funds transfer long-term capital gain, 2 crore, 5 crore, जितना भी capital gain होगा, not taxable in India under the treaty. Simple. Hong Kong it is not there, I think, only Singapore. Hong Kong there is no treaty, there is a limited treaty. This clause is not there. You have to see the clauses. The last clause is important. Any other asset, उसका taxability किधर है? If it says may be taxed in other state, then it is taxable in India. But if it says taxable only in resident state, then you are home. This is within the four corners of the law. Which India by the mutual fund, will they deduct India? So they will deduct TDS. What is the So purpose? you will have to claim a refund. Royalty and FTS, section 96, royalty. पहले 916 था, अभी royalty 96 है. Transfer of all of any rights including license in patent, invention, model, design, secret formula or process. Copyright, literary, artistic or scientific work including films or videotapes using in TV or radio broadcasting. Imparting information concerning working of these assets or technical, industrial or scientific knowledge or experience or skill. Use of any IP or right to use any industrial or commercial or scientific equipment. Now this is specifically for say television industry, broadcasting industry, etc. ठीक है? It also includes rendering services in connection with the above. रेट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन अगेन, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में देयर वर जजमेंट्स व्हिच सेड दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, देयरफॉर दे ब्रॉट इन दिस एक्सप्लेनेशन फॉर यूज और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेबल इन इंडिया. टेस्ट और पोजेशन और कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ लोकेशन of right property or information not relevant. Again, specifically for media industry, जहां पे क्या होता है, ट्रांसपॉन्डर होता है जो हम लाइव मैचेस देखते हैं. फॉर एग्जांपल लाइव फीड जो आता है हमारा, अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू है, ठीक है, इंडिया का T20 का बात नहीं करेंगे, जाने दो. इंडिया वुमेन हिस्टोरिक टेस्ट मैच चालू है लॉर्ड्स में, राइट, विच वी माइट विन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो ऑल दोज मैचेस आर टेलीकास्टेड लाइव इन इंडिया. बट ट्रांसपॉन्डर है जहां पे सिग्नल अपलिंक होता है, डाउनलिंक होता है, दैट इज नॉट इन इंडिया, दैट इज समवेयर आउटसाइड, इधर इन सिंगापुर और इन लंडन और वेरेवर. सो द आर्ग्यूमेंट विच वाज देयर कि आई एम पेइंग रॉयल्टी, इंडियन पार्टी इज पेइंग रॉयल्टी टू से स्टार स्पोर्ट्स और ESPN और whosoever outside India for the telecasting rights, but equipment is outside India. I don't have a control over that equipment. मैं उस इक्विपमेंट को कुछ नहीं कर सकता. वो एक जमाने में एंटीना आता था, पता है, घर के ऊपर खराब हो गया तो ऐसे हिलाते थे, वो ट्रांसपॉन्डर को जाके थोड़ी मैं हिला सकता हूं, राइट. आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट. सुप्रीम कोर्ट सेड यस, बराबर है, यू डोंट हैव कंट्रोल, सो देयरफॉर दिस इज नॉट टैक्सेबल. गवर्नमेंट बोलता है नहीं चलेगा, हमको चाहिए तो लो. टेस्ट ऑफ पोजेशन, कंट्रोल, यूज, लोकेशन कहीं भी है, वी आर नॉट कंसर्न. इफ यू आर पेइंग फ्रॉम इंडिया, इट इज टैक्सेबल. तकलीफ ये है गवर्नमेंट के लिए, ट्रीटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सो ट्रीटी प्रोटेक्शन विल स्टिल बी देयर इवन आफ्टर दिस अमेंडमेंट. एक्सप्लेनेशन प्रोसेस इंक्लूड्स यूज, और यही बोल रहा हूं, देखो मैं, यूज और राइट टू यूज ट्रांसमिशन बाय सैटेलाइट इंक्लूडिंग अपलिंकिंग, amplification, downlinking, cable, optic fiber, any other similar technology, irrespective of whether such process is secret or not.
expanded the scope to cover software, bandwidth charges, transponder hire charges, connectivity charges, and these payments are very huge, mind you, very huge payments. ठीक है, ये सब अभी 9(6) में आ जाए, subsumed under section 9(6). ट्रीटी में आते हैं, as you know there are two models, OECD model, UN model, एक और अलग दुनिया है, ट्रम्प का दुनिया, US model, right? They don't follow anybody else, we will follow only our own model. But India generally follows UN model. India generally follows UN model. India is not a part of OECD, if you know. India is not a member of OECD. पर जो MNI आया, multilateral instrument, that is a part of OECD. Best part is India is not a member of OECD. Still India has signed all MLIs. MLI sign करने में ऐसा है कि you have an option to select the countries. कि कौन सा country के साथ आपको MLI sign करना है. India control A, except for one or two countries where recently treaties were signed. वो दोनों छोड़ के बाकी सारे 96-97 countries I accept the MLI. All the changes by OECD we accept. हम member भी नहीं है OECD के. But since the provisions are beneficial to the source country, we sign the MLI. UN model क्या बोलता है? Use or right to use. Use or right to use. Copyright of literary, artistic, scientific work, including cinematographic films or tapes. ठीक है? Patent, trademark, design. तो ये जैसा एक्ट में है वैसा ही है, सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन इधर नहीं है. So if I am talking about the transponder charges, am I using it? I am not using it. I am using the service. I am not using transponder. मेरे पास है ही नहीं. Do I have the right to use? Right to use मतलब is it in my possession? ना. तो ना इधर बैठता हूं ना उधर बैठता हूं, तो ट्रीटी प्रोटेक्शन तो है मेरे को, राइट? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक एक्सपीरियंस. ठीक है? सो ट्रीटी प्रोटेक्शन विल बी देयर. इफ यू लुक एट टैक्सेबिलिटी अंडर द एक्ट, सेक्शन 5 says इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. सेक्शन 9 says 9(1)(6), अभी 9(6) हो गया. रॉयल्टी डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया इज पेड बाय गवर्नमेंट. Resident except for business or profession or source of income outside India. Non-resident where it relates to business, profession or source of income in India. Taxable on gross basis at 20%. Even under the new law, it is taxable at 20% on gross basis. Taxable on on net basis. अगर PE है इंडिया में, permanent establishment है, तो taxable on net basis at 40%. ठीक है? So this is the entire crux of it. 44DA net basis. Gross basis 20%, 40% net basis. 28 to 44 is now 26 to 58 in the new act. So effectively royalty is taxable at a gross basis of 20%, right? Treaty में 12(1) distribution of rights of contracting state, who has the right to tax. 12(2) gives you the rate of tax. 12(2) gives you the rate of tax, which is generally 10%, 15% or maximum 20%. उससे beyond नहीं है. Generally it is 10%, in some cases 15%. Meaning of the term royalty: taxation of royalty if effectively connected with the PE to be taxed as per Article 7. 12(5) says article arising in the state of source, that is India in our case, where payer is resident, or if payer has a PE or fixed base of PE in India, then it is again taxable in India. 12(6) says adjustment for related parties. So if you have paid to related parties more than the arm's length price, then that arm's length price के ऊपर वाला, that will not be considered for the concessional rate of 10% or 15%. This is how the treaty Article 12 is worded. FTS, again, if you look at the act, section 9 subsection 7, section 9 subsection 7, managerial, technical or consultancy services, including provisions of services of technical or other personnel, does not include consideration for construction, assembly, mining or like projects, income by way of salary, because this is taxed separately. कोई मेहरबानी नहीं है, it is taxed separately. ठीक है? Definition is same. Royalty हो या FTS हो, दोनों definition same है. If you exclude the explanations,
both definitions are same, royalty भी और FTS भी. Development and transfer of technical plan or design under OECD, UN and US सभी में there are no specific article on FTS either on OECD, UN or US. पर specific treaties में FTS का article है, specific treaties में FTS का article है, ठीक है. Concept of make available, this is interesting. Anybody aware of the concept of make available? Yes. We are able to carry out. You should be able to carry out, okay. Make available what? Make available technology. Make available technology or technical input. ठीक है. Transmission of technical knowledge. What does it mean? अभी कोई भी काम हम करेंगे तो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, क्योंकि अभी तो एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. So mere use of technology does not mean I am making available the technology, right? What does it mean is mere requirement of technical input by person providing service does not necessarily mean that technical knowledge is made available. Use of a product which embodies technology, hardware हो गया, software हो गया, cannot be considered to be making available technology. Transmission, this is important. Transmission of technical knowledge, skill, etc. from person rendering service to person utilizing service. Technical knowledge or skill, etc. must remain with the person utilizing the service even after rendering the service has come to an end. Person utilizing the service is able to make use of technical knowledge independently without recourse to the performance of service in future. Simple example, if I am providing any technical service, say that service is development of a software. I am developing a software for you, and on completion of development, I give you the source code also, and I give you all the rights to modify those source codes. आगे चल के आपको जो करना है आप कर सकते हो. Then I am transmitting the technical expertise also. But if I am merely giving you the software, if you need any changes, if you need any modification, you have to come back to me. Then that is not technical transfer or make available. That is not making available. This is a very huge, I would say, exception in specific countries like US, UK, Australia, Singapore, all major countries. They have this make available clause. Make available clause. So if I fall out of make available clause, if I don't make available the technical expertise, simple चीज है make available का definition. आगे चल के अगर मुझे ये काम करना है, क्या मैं खुद से कर सकता हूं? If answer is yes, only then this is make available. Otherwise the services don't make available. And therefore it will not be taxable in India. However, you have to prove by documentary evidence that you don't make available. ठीक है? हाँ जी. Yes. So suppose I am a doctor. I change the example, because if I am an individual, I will not fall here. I will fall in independent personal services. It is a company, Singapore-based company or a Singapore-based hospital, corporate hospital, that will fall here, who is providing the robotic surgery trainings, right? And after, suppose I am a doctor in India, after attending that training, I will be able to conduct the robotic surgeries on my own without consulting the Singapore hospital. Then this makes available. Yes, then it does make out. Individual के case में it will not be taxable. If I am an individual doctor, I fall in independent personal services. Their clauses are very different. I don't come to India, I am not taxable. That is the same case. Corporates, yes, it is taxable. Again, similar 12.1 to 12.6 जैसे रॉयल्टी में था वैसे ही सेम.
some countries have a combined clause for royalty and FTS as far as treaty is concerned. Taxability of dividend interest. Same is interest is taxable at the rate of 20%, long term at the rate of 12.5%. So these are specific tax rates for ready reference. You can go through it. I have not spent much time on it. Yes, sir. Robotic surgery example, the doctors abroad, conducting robotic surgery of an Indian patient in an Indian hospital. And he charges Indian hospital, plus hospital charge from India individual. Correct. When the hospital is making payment, to that doctor, what will the impact in is the applicable? It will not be taxable because He is generating service. if he is outside India, he has not come to India. I fall in the independent personal services, and independent personal services says if you don't spend substantial time in India, which is 182 days generally, then I am not taxable in India. Or that is going to approve or arises from India. Yes. Still will be Yes. Treaty production will be able to. Yes, sir. The special rates for not resident, if you take the tax at the rate of 20%. Yes. For example, if you find the return, let's say he has a 5 lakhs of 7%. If that if you get a flat rate benefit also, then 4 lakhs is eligible. No. So that's not a tax rate. No. No. Only 20% flat rate. Then The advantage of people who have got more income there for them. Yeah, for them it will be beneficial. The TDS also they are deducting 20% only. Yeah, TDS also they are deducting 20%. So these are few exemptions available: NRI account, global depository bonds, rupee denominator bond, bonds of IFSC. All these are exemptions. Government securities. MFN clause, most favored nation. Very hot topic couple of years back. अब MFN clause क्या है? It is a simple negotiating instrument of a treaty. If, for example, this is specifically largely with OECD member countries like the European countries. European countries में क्या होता है? There is a cutthroat competition for trades. Practical, technical logic बता रहा हूँ. कि फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, all these are doing similar activities, similar businesses, and the MFN clause for most of these countries, Singapore, France हो गया, Switzerland हो गया, Netherlands हो गया, they have, while at the time of entering into the treaty, assuming the treaty was entered into 1989, 1990, they have one clause, either in the treaty itself, generally it is by way of a protocol, which is towards the end of the treaty. What that protocol says कि अगर ये treaty enter करने के बाद आप किसी और OECD member country के साथ treaty enter करते हो मेरे बाद with either a reduced scope मतलब मेरी treaty में make available नहीं है, मेरी treaty में make available नहीं है, उस treaty में आपने make available benefit दिया, you are reducing the scope of taxability. Case 1. Case 2, और a reduced rate of tax. मेरी कंट्री के केस में आपने टैक्स रेट रखा है 20%. फॉर एग्जांपल स्पेन is 20% under the tax rate, tax treaty. But by virtue of MFN, it reduces to 10%. It reduces to 10%. तो या तो आप स्कोप कम कर रहे हो, मेक अवेलेबल दे रहे हो उसको, तो मुझे भी चाहिए, या मुझे 20 है उसको 10 है तो मुझे भी 10 एप्लीकेबल. दिस इज सिंपल मेक अवेलेबल क्लॉज. ठीक है. तो कुछ साल पहले तक ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि मेक अवेलेबल नहीं, सॉरी, MFN क्लॉज, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज. तो कुछ साल पहले तक ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अप्लाइज ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी. प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है तो वापस से नोटिफाई करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. फिर जागा लालच किसका? फॉरेन टैक्स पेयर्स का, गवर्नमेंट का नहीं. ये मस्ती फॉरेनर्स का है, गवर्नमेंट बाद में आया पिक्चर में. फॉरेन प्लेयर्स ने क्या चालू किया? अगेन इंडियन बिग फोर्स. नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट सो आई कैन ब्लेम देम. आइडियाज तो हम ही लोग देते हैं ना, उनको किधर बेचारों को पता है? वो तो इंडिया के नाम से कांपते हैं. हो इंडिया फुल ऑफ लिटिगेशन. उनको हम ही आइडिया देते हैं, नो नो वी विल सेव योर टैक्स. देयर इज वन ट्रीटी, you might not have heard the name of the country, Cambodia. Example.
जहां पे 5% टैक्स रेट है डिविडेंड का, यू कैन क्लेम दैट बेनिफिट। तो फ्रांस वाला तो पहले डरता है, सच में मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा है, आर यू कॉन्फिडेंट? और बाद में लिटिगेशन नहीं चाहिए, अरे हम कर लेना, व्हाई आर वी हियर फॉर, विल डू इट, वी नो मोदी पर्सनली, विल डू इट। ठीक है, अभी वो 5% वर्सेस 15% और 20% लालच आ गया, टैक्स तो सबको बचाना है, ठीक है कर दो। तो एलडीसी फाइल किया, क्या, लोअर विथ होल्डिंग टैक्स 5%। तब जाके पहली बार गवर्नमेंट को समझा कि ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में। आजकल के इनकम टैक्स ऑफिसर्स आर वेरी शार्प, पहले वाले जैसे नहीं है, पढ़ लिख के आते हैं वो, हम ही सिखाते हैं वो बात अलग है। आई एम वन ऑफ द ट्रेडर्स एट एनएलईडी आल्सो, बट द पॉइंट हियर इज डिपार्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मिलेगा 5%, नहीं मिलेगा। मैटर वेंट अप टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलता है 5% मिलेगा, हाई कोर्ट सेज 5%। अभी क्यों क्या, विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट दिल्ली हाई कोर्ट, नेस्ले फ्रांस, दे से 5% इज एप्लीकेबल। सुप्रीम कोर्ट ने गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। और प्रॉब्लम ये आया, ये 5% की वजह से मेक अवेलेबल वाले भी अटक गए, बिकॉज मेक अवेलेबल में द पॉइंट वाज गवर्नमेंट वाज गिविंग बेनिफिट, दे वर नॉट आर्ग्यूइंग कि मेक अवेलेबल फ्रांस सिटी में नहीं है, बट बिकॉज ऑफ नीदरलैंड ट्रीटी एंड बिकॉज ऑफ अदर ट्रीटीज दे वर गिविंग मेक अवेलेबल बेनिफिट, देयर वाज नो डिस्प्यूट बाय गवर्नमेंट आल्सो। एमएफएन, सॉरी माय बैड, नहीं इवन एमएफएन, इवन मेक अवेलेबल, मेक अवेलेबल का बेनिफिट थ्रू एमएफएन, मेक अवेलेबल का बेनिफिट थ्रू एमएफएन वी आर क्लेमिंग, एंड गवर्नमेंट वाज गिविंग आल्सो हैप्पीली 20% का 10% वहां पे सेविंग हो रहा था, नो डिस्प्यूट नथिंग। लालच में ये जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, मेक अवेलेबल वाले भी बफेलो वेंट इनटू वाटर, कई वेस्ट पानी में। फिर डिस्प्यूट आया, एएसजी very sharp, Venkat Ramani argues before the Supreme Court and says MFN clause is not automatically applicable, it has to be notified separately। एसएससी बोलता है वो नोटिफाइड क्या, साइन किया हुआ एग्रीमेंट, मतलब तुम एक बार बोल रहे हो कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद जब उस एग्रीमेंट का क्लॉज मुझे अप्लाई करना है तो वापस मुझे नोटिफाई करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट, इट इज अ बायलैटरल डॉक्यूमेंट साइन। But fortunately, unfortunately, the current status of the Supreme Court is such, with due respect, that they cannot go against the government, and ultimately gave in favor of the revenue. Amount stakes were very high, so they gave in favor of the revenue, और उसकी वजह से बाकी सब भी मेक अवेलेबल वाले केसेस भी अब फंस गए। उसके बाद अब स्पेन ट्रीटी जाके नोटिफाई हुआ है ऑलरेडी, they have notified the MFN clause। फ्रांस ऑल्सो इज ऑलमोस्ट डन, फ्रांस भी अभी नोटिफाई हो गया जस्ट रिसेंटली, बट अदर कंट्रीज आर येट टू बी नोटिफाइड। सो ज्यादा लालच बुरी बला, MFN clause, राइट? So this is the example of MFN clause। Then we quickly come to the concept of permanent establishment. I'll not spend much time. We have to close at what, 1:15? 1:15, right? Okay, we have time. So quickly moving on to the concept of permanent establishment, ये क्या है कि कोई फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में प्रेजेंस है, in layman's language, any foreign company who has a presence in India, that will be considered to have a permanent establishment in India. Now, what is that presence? That is what we are going to discuss. Business income इंडिया में टैक्सेबल तभी होगा if I have a permanent establishment in India. परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस एक्ट 2002 में आया था, फाइनेंस एक्ट 2002 में आया था, 92F3A। नाउ द करस्पॉन्डिंग सेक्शन इज 173T। इट स्टेट्स, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, P includes a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partially carried out. Supreme Court Morgan Stanley says the definition is includes, P is inclusive definition. So it includes other types of fees also, like service fee, agency fees, construction fee, ये सारे fees को वो cover करता है। That is what Supreme Court says, Morgan Stanley.
राइट। अब ये सब पी क्या है, आर दीज डिफाइंड अंडर द एक्ट? द आंसर इज नो। जनरली क्या होता है, ट्रीटी में हम बोलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक लॉ। यहां पे उल्टा है, ये सारे कंसेप्ट आएंगे ट्रीटी से, सर्विस फी, एजेंसी फी, क्योंकि एक्ट में तो कहीं पे डिफाइंड है ही नहीं। एक्ट ओनली सेज फी इंक्लूड्स फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। सो फॉर ऑल दीज कंसेप्ट्स यू हैव टू गो बैक टू द ट्रीटी। ट्रीटी में कौन सा टाइप्स है? फिक्स प्लेस, मतलब आई हैव अ फिक्स प्लेस इन इंडिया, एक ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, वेयर हाउस हो गया, गोडाउन हो गया, कुछ भी। फ्रॉम हूम और फ्रॉम विच प्लेस आई एम कंडक्टिंग माई बिजनेस? आई मतलब फॉरेन कंपनी, आई शुड हैव अ फिक्स प्लेस जहां से मैं बिजनेस रन कर रहा हूं एज अ नॉन रेजिडेंट, ऑफिस, ब्रांच, फैक्ट्री एक्सेट्रा। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, देन पी प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज, मतलब बैक ऑफिस सर्विसेज है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, सिर्फ बिलिंग हो रहा है, सिर्फ सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी, तो फिर पी नहीं। पर अगर कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है लाइक सेल्स और सर्विसेज, देन इट विल कंस्टिट्यूट माय पी इन इंडिया, फिक्स प्लेस पी। दूसरा है एजेंसी पी। एजेंसी पी में दो है, डिपेंडेंट एजेंट, इंडिपेंडेंट एजेंट। डिपेंडेंट एजेंट का कंडीशंस अगर हमको देखना है, सिमिलर कंडीशंस एज वी सॉ इन बिजनेस कनेक्शन, टेकिंग ऑर्डर्स और प्लेइंग अ की रोल in negotiating the contracts etc, concluding contracts, all those stuff comes in the definition of dependent agency fee. Independent agent है तो business connection में से भी मैं बाहर हो जाता हूं, यहां से भी बाहर हो जाता हूं। Installation fee for huge construction sites. Now we have a lot of infrastructure projects in India. We have a lot of infrastructure projects in India wherein we have Japanese contractors, Korean contractors, Singaporean contractors. So all those contractors, if they have a presence in India, site office or a presence in India for 6 months or more, then they constitute an installation fee. Then they constitute an installation fee. Last but not the least, service fee, जहां पे फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉइज इंडिया में आके सर्विस देते हैं, फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉइज इंडिया में आके सर्विस देते हैं, एंड दे स्पेंड अ पर्टिकुलर टाइम, जनरली more than 90 days or more. Some treaties have 180 days, some treaties have 30 days, अलग अलग डेट से, but generally 90 days or more is the criteria. If I am satisfying this, then service fee also triggers. So either of these P's may trigger. अगर P trigger हो गया तो my entire income will be subject to domestic tax laws at the rate of 40%, while technically they say net basis, practically it becomes gross basis. Because in order to claim expenses in India, we have various conditions. For example, TDS काटा है क्या नहीं, TDS नहीं काटा है तो 40 एप्लीकेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट पेमेंट्स एक्सेट्रा अदर पेमेंट्स है तो 43 भी ट्रिगर हो जाएगा। सो टेक्निकली आई विल नॉट सेटिस्फाई द इंडियन लॉस बिकॉज आई एम अ नॉन रेसिडेंट, सो अल्टीमेटली प्रैक्टिकली इट माइट एंड अप 40% ऑन ग्रॉस बेसिस प्रैक्टिकली, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉरेन रेमिटेंसेस 15 CACB, राइट। Lower withholding, because this is where I think a lot of people might be working, issuing 15 CACB now from 145, 146, and withholding taxes, issuing certificates, TDS certificates specifically for various remittances, royalty, FTS हो गया, और even for payment for sale of property also, very common case. If I am buying a property from non-resident, right? What is the tax rate, TDS rate applicable? 1%. 1% ना? 1% ना? 194 IA पुराना section 1% था ना? I have seen n number of chartered accountants apply 1% even to non-residents, left, right, and center, issuing 15 CACB and arguing, boss 1% है ना? That is for a resident. For non-resident, it is 12.5% अभी, plus surcharge cess करके 15% हो जाता है, right? So therefore, there also these provisions come into picture, because as Madam rightly pointed out, should I deduct on gross or should I deduct on net? बोलने के लिए तो हमने बोल दिया gross, सामने वाला मानेगा नहीं, डील ब्रेक हो सकता है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है,
सी फेसिंग है, बालकनी है, आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन द प्रॉपर्टी, तो हम वो लालच में, बिकॉज हम एज इन घर लेने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको क्या है, उसको तो घर चाहिए, पैसा तो है मेरे पास, तो आई इग्नोर, आई डिडक्ट ऑन नेट बेसिस एंड देन लेटर ऑन गवर्नमेंट नॉक्स माय डोर, दैट इज वेयर आई एम स्टक, आई हैव टू पे इट टू द गवर्नमेंट, सामने वाला तो गया, वो तो एनआरआई, so therefore there these provisions are very handy. Section 195(1), where I am liable to deduct tax at source for making payment to non-residents. Now the new section is 393(2) in a tabulated form. 195(2), application by the payer. Can a payer make an application for loan withholding? The answer is yes. So अगर आप first practical choice is you have to ask the seller कि बॉस तू तेरे सीए को बोल लोअर विथहोल्डिंग लेके दे, वो बोलेगा यार मेरे को ये सब नहीं पता, मेरे को झमेले में नहीं पड़ना है, so can you safeguard your interest as a payer? Answer is yes. You can also apply under 195(2), now 395 subsection 2. You can also apply to the government, to the tax officer, for determining the appropriate proportion of sum chargeable to tax. 195(3) says application by the payee. Generally it has to be 195(3). Payee only has to apply, but कुछ cases में जहाँ पे payee नाटक करता है, you can safeguard your own interest and go under 395(2) and do it yourself. Validity of certificate is now in 395(1), earlier 195(4). Power of severity to issue rules under earlier 195(5), now 395 plus read with rules. Furnishing of information relating to payments 397(3), earlier 195(6). Authority of severity to specify class of persons who shall make application under section 195(2). This is now 397(3). And grossing up 195A अभी हो गया 393(10). 195(1) and 393(2) both are exactly the same. ठीक है, प्रोवाइजो भी है, वो सारे प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन इज subsumed in 393(2). It says any person responsible for paying a non-resident, not being a company or to a foreign company, any interest or any other sum chargeable in the provisions of the act. This is important. Any other sum chargeable to tax under the act, not being income chargeable under the head salary, because salary is in 192, shall at the time of credit or payment, whichever is earlier, deduct the income tax thereon at the rates in force. So who is liable to pay deduct tax at source? Any person responsible for paying to a non-resident. I am an individual, I am a salaried person, am I covered here? Yes, any person. Domestic law में for various payments like 194C, 194H etc., वहां पे तो at least there is an exception, individual HUF को ना tax audit applicable नहीं है, तो I am not liable to deduct tax at source. But यहाँ पे no exception whatsoever. You are a salaried employee, you are a retired person, you are on ICU, does not matter. This is applicable, right? Credit of sum to the account of the payee, credit of sum not to the account of the payee shall be deemed to be the credit. So basically बहुत बार क्या होता है कि I don't credit it to the payee's account, I create a general suspense account or accounts payable account, उसको क्रेडिट करता हूं, बोलता हूं मैंने तो पार्टी को क्रेडिट नहीं किया, एक्सप्लेनेशन से डज नॉट मैटर, कहीं भी क्रेडिट करो टीडीएस ट्रिगर हो जाएगा. Explanation 2, 195(1) applies to non-resident also, because again any person includes resident and non-resident both. तो जो क्वेश्चन था ना कि उसमें कैसे टैक्स होगा, दोनों बाहर है, फिर भी non-resident also is liable to deduct tax at source under 195(1). Who is responsible? Any person, जैसे मैंने बोला any all resident non-resident सब आ गए. पेमेंट किसको करना है? नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी. इट डज नॉट इंक्लूड RNOR, इट डज नॉट इंक्लूड RNOR. ठीक है, ये सारे पेमेंट्स कब डिडक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्ट सेज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बट इफ यू गो टू द ट्रीटी Article 12 for example, it uses the word paid, it uses the word paid. तो मैंने क्रेडिट कर दिया पर पे नहीं किया, मैंने
क्रेडिट कर दिया पर पे नहीं किया, ठीक है, मैंने क्रेडिट कर दिया पर पे नहीं किया, सो देयरफॉर कैन आई आर्ग्यू treaty says royalty or FTS arising in a contracting state and paid to a resident of other contracting state. treaty बोलता है paid. Can I argue TDS is applicable only on payment basis? The answer is yes. There are various judicial precedents if you see here. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ये पुराना जजमेंट है, बट हाल ही में there are various Bombay High Court judgments also. See this. Siemens है, Johnson and Johnson है, Booz. This was argued by us. Booz. I was involved in this case. ठीक है, अब ये चीज कैसे हुई, स्टोरी भी बोलता हूं इसके पीछे की, कि बहुत बार क्या होता था, पीपल यूज्ड टू फॉरगेट टू डिडक्ट टैक्स, जेन्युइन गलती था, जेन्युइन गलती था, पीपल यूज्ड टू फॉरगेट टू डिडक्ट टैक्स, फिर डिपार्टमेंट 40 लगाता था, अभी केस तो आर्ग्यू करना है, तो रास्ता निकालो रास्ता निकालो रास्ता निकालो, ट्रीटी में पड़ा पेड, ट्रीटी में है वर्ड पेड, उधर से आइडिया है, ये आइडिया लिटिगेशन का आइडिया है, ये सारे जितने भी है ना, सीमेंस वाज आर्ग्यूड बाय अस, बूज वाज आर्ग्यूड बाय अस, सीएससी टेक्नोलॉजीज, नेशनल ऑर्गेनिक, उदय जीएमबीएस, उदय तो पुराना है, बट नेशनल ऑर्गेनिक, ऑल दीज केसेस पर, ऑल सच केसेस जहां पे गलती हो गया था, भूल गए थे, वो भूल का रास्ता निकाला, और फाइनली द कोर्ट्स हैव आल्सो एग्रीड कि ठीक है पेड है तो पेड बेसिस पे टीडीएस होगा, ठीक है, दिस इज हाउ दीज जजमेंट्स आर, बट प्रैक्टिकली अगेन लिटिगेशन होगा, ट्राइब्यूनल तक जाना पड़ेगा, कम से कम ट्राइब्यूनल तक जाना पड़ेगा, एक एआर नेगेटिव भी है, फ्लैग पुराना है 2004 का, उसके बाद भी है फेवरेबल जजमेंट्स आल्सो, बट यू कैन यू टेक द रिस्क, आर्ग्यूबली यस, इफ यू हैव द रिस्क एपेटाइट एंड पेइंग टू द काउंसिल, डेफिनेटली व्हाई नॉट, यस मैम, हाँ करेक्ट, correct, so that is commission income paid to a non-resident. Does that non-resident have any office in India? No, they don't have any presence in India, right? Effectively, I am making the payments to a non-resident, which is his business income, no presence in India, taxable in India only when I have permanent establishment in India. Here I don't have a permanent establishment, that sum is not chargeable to tax in India, I am out of 195, no TDS, no TDS, no. 10F only when I am claiming a treaty benefit. 10F comes into picture if I am claiming a treaty benefit. Here I can very well claim this is not taxable in the law itself. No, not required. G, Supreme Court, this is very important because this is the Supreme Court decision which has laid down when the TDS has to be applicable. It says payer not liable to deduct tax if the amount is not chargeable to tax. Exact answer to what Madam just asked. I can rely on G saying that this is not liable to tax in India, therefore no TDS. Section 195 to apply is where the payer is in no doubt that the tax is payable in respect of some part of amount. It applies only in cases of composite payment. Abhi suppose out of 100, 20 is towards royalty and FTS, which is taxable in India. TDS is to be deducted only on 20, not on 80. That is what G says. That is what G says. It applies only in case of composite payment in which certain portion has an income element. If the payer is fairly certain that he can make his own determination of TDS without approaching the AO, Supreme Court says. But fairly certain is somewhere gray area. You are certain. You have to go to the tribunal to make yourself certain. In the first case, you will decide to not chargeable tax. At least, see, ultimately the payer is to take. That is what? So you can approach the AO court. Definitely, the safest route is approach the AO, take his blessing, matter ends. As a deductor, I will always say,
don't take the hit of litigation on your head as a payer, because पेई तो पैसा लेके भाग जाएगा, फंसोगे आप. Simple. So scenarios: entire payment not chargeable to tax, not required to deduct tax at source, no withholding. Entire payment subject to tax, tax should be withheld on entire amount. Part payment, Supreme Court के हिसाब से tax should be withheld on appropriate portion of sum chargeable to tax. Part payment subject to tax in India, payer unable to determine, go to the officer. जैसे capital gain का ही केस है, right? You have the cost of acquisition also. You reduce that, and on capital gain he is liable to tax. But who am I to decide? I will take those documents, I'll go to the AO, by ये calculation है, ये computation है, certificate दे दो, matter ends. Payer believes that tax should be withheld, but payee does not agree. Approach the AO. ये हमेशा होता है. Payee बोलता है I am not concerned, मेरे को इंडिया में टैक्स नहीं भरना है, but that is not my problem. I will be governed by my income tax, my government. Business profession, as I said, taxable if business connection in India, और treaty में if I have a permanent establishment in India. Salary income 9(3) में बैठेगा तो taxable, और dependent personal service article 15 में बैठेगा तो taxable. Act or treaty, whichever is beneficial always. Dividend income again taxable in both cases. Interest income again taxable in both cases. Treaties, royalty and FTS we just discussed. Capital gain also we just discussed. Right? Capital gain में generally treaty में भी it is taxable unless we have a case of other assets, जैसे mutual fund हमने discuss किया, किसी treaty में ऐसा है benefit, then definitely we can take that benefit. Right? Whether the rates in treaty should include education cess, because treaty rates are 10%, Act में 20% plus surcharge cess etc. है, ठीक है? So there are various judgments which categorically say now this is a settled matter. Treaty rate पे surcharge cess नहीं आए. If you are applying treaty rate, no surcharge cess. Payment of royalty or FTS connected with the PE, TDS at the rate of 40% on net basis. PE है तो 40% on net basis. Right? Presumptive taxation में 195 आएगा क्या? Answer is वहां पे भी आएगा. Right? Whether TDS is applicable on GST component, answer is no. Exceptions, ये सारे exceptions है जहां पे specifically rates दिए गए हैं, so that is okay. Grossing up 195A, ठीक है? अभी majority cases में क्या होता है? When I am making a payment to non-resident says I don't understand India. इंडिया का मूड कब चेंज हो जाए पता नहीं, मुझे इंडिया में कोई लिटिगेशन नहीं चाहिए, मेरे को मेरा जो 100 रुपया है वो दे दो, तुम तुम्हारा टैक्स देख लो. क्रॉसिंग अप, आई वॉन्ट माई 100, वो टीडीएस बीडीएस सब तुम्हारा ऑब्लिगेशन. दैट इज व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस. तो इंडियन कंपनी बोलता है ठीक है, आई नीड योर सर्विस, आई विल बेयर द टीडीएस. सो व्हेन यू से आई विल बेयर द टीडीएस, यू हैव टू ग्रॉस अप. हाउ डू यू ग्रॉस अप? दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सेज. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल पे जाते हैं. इफ द अमाउंट पेएबल इज 100, टीडीएस रेट इज 10%, ग्रॉस अमाउंट इज 100, ठीक है? दिस इज 90, ये 90 है. Assuming surcharges भूल जाओ for the sake of simplicity. This is 90. So 100 divided by 90 into 100. So therefore amount payable is 111.11. 11.11 is the TDS which I deposit to the government. उसको 100 रुपया दे दिए. Crossing, right? No multiple crossing up. एक ही बार crossing up होगा, बार बार crossing up करने का जरूरत नहीं. ठीक है? एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन के केस में क्रॉसिंग अप नहीं होता है. ठीक है? टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट में भी क्रॉसिंग अप नहीं होता है, बिकॉज दैट इज कवर्ड इन सैलरी एज सच. एप्लीकेशन बाय द पेयर, एज आई सेड कि पेयर आल्सो कैन सुओ मोटो अप्लाई फॉर लोअर विथहोल्डिंग. लोअर नील विथहोल्डिंग इज अ क्वेश्चन मार्क, डिबेटेबल, बिकॉज देयर आर जजमेंट्स ऑन बोथ साइड्स. नील विथहोल्डिंग के लिए दिल्ली ट्राइब्यूनल, मुंबई ट्राइब्यूनल सेज यस you can do that. जी बोलता है जरूरत नहीं है, you can suo moto do it yourself, no need to approach officer also. So there are two views.
But ideally, you can very well approach the officer for nil also. Let him say not applicable or whatever. 195.3, this is generally the obligation of the payee to approach the officer for lower withholding or nil withholding. फॉर्म 13 जो हम अप्लाई करते हैं 197 के लिए, नाउ दैट इज फॉर्म 128. 197 में जो फॉर्म 13 लगता था दैट इज फॉर्म 128. 197 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 395 सबसेक्शन 1. 395 सबसेक्शन 1. So these are the categories where government has already notified Rule 29B, Rule 209 of the new rules, wherein who can apply as a payee. That is okay. 15C और D था पहले, अभी वो combined form हो गया 126, Part B and Part C. So this is just an overview. This is just an overview of all three sections. Last but not the least, 195 ये तो हो गया. 206AA, PAN is mandatory. अभी सेक्शन आ गया 397 subsection 2 of the new act. Right? So effectively, if there is no PAN, then the tax is applicable at the rate of highest rate, which is 20%, right? Or the rates in force, whichever is higher. So I will not go into detail. This is how 206AA is applicable. Again, grossing up है तो grossing up पे भी आएगा. Last aspect which I want to focus, yes, is 15 CACB. In that case, if you have the TRC and all in place, then you may not deduct. 20%. So 10%. Yes, if you have TRC and all, definitely you can. TRC नहीं रहा, technically you have to deduct as per the domestic law, ask the payee to claim refund. But practically, people are deducting at the lower rate in assumption कि मुझे आगे चल के TRC मिल जाए. See, because practically you have to produce the TRC during the assessment or when the questions are raised by the TDS authorities. So therefore, practically किसी केस में क्या होता है, timing difference होता है. TRC is for the calendar year. I am making the payment in January. So there are practical calls to make because TRC आते time लग जाएगा, February, March हो जाएगा. My accounts payable team is chasing me कि भाई payment करना है, मेरा payment terms हो गया. So practically people are making the payment based on the old TRC, assuming that the new TRC also will come in place. But technically, as per the law, if you ask me, if TRC is not in place, you have to deduct as per the domestic law, but nobody follows this practically. That audit company has to file the return. Yes. We can use of that. Definitely you can. Why not? Definitely you can. Yes. TRC is not issued. What I have to do, what is my tax rate? That's not effective, yes. You have to, yes, definitely. As a tax auditor, you have to. सब आएगा. I haven't seen any tax auditor doing such a wonderful job, to be honest. The same question I am getting now. Yeah. In complete. And taxation. Mic दो ना इनको, mic दो. I tried manufacturing EV two-wheelers in India, in Mumbai. Paying salary to the consultant in China for the test verification and all. In that case, that person employee of the China has not produced TRC or any certificate. They are paying salary to him without the TDS certificate. There is objection, but they are very.
What is it to tell the mind? You are a tax auditor or you are a litigator? Both. Agility and many. So yes, tax audit definitely you will have to report, but as a litigator, you will have to see if it falls under the treaty and how do you argue technically. But as an auditor, definitely you have to report as non-deduction. For sure. Because China treaty is worded differently. China treaty, if I remember, it says services has to be rendered in India. Something of that sort is there in China. China treaty is unique. There is one judgment on China treaty, after which they brought in an amendment in domestic law, but treaty remains. There is some typical wordings in China treaty. I remember. Yes, sir. Sir, suppose I was a NR, big NR last financial year 25-26, and I am NRI, big NR. And in one of the May, I sell one property. What should be the biggest rate? It should be 12.5% or okay, 1%. I am a not ordinary resident. Yeah, last year. Okay. 25-26. So I am a deemed resident. I am not a resident per se. Yeah, exactly. Right. So NOR. I am a resident, but not ordinary resident. Exactly. So which rate should apply? 12.5 or 1? Yeah. 12.5 or 1? 12.5 or 1? I am a resident, but not ordinary resident. Haji? 1? Can I argue 1? Tribunal जाना पड़ेगा, but 1. We can say 1. Because I am a resident. Resident but not ordinary resident. That is second part. First leg is resident or non-resident. I am a resident. So 1% can apply. The month of May, where only months have not even passed. That is important. That is important. How do I determine today? Status. Yes, sir. Second question is then about that capital on redemption mutual funds. If suppose if I am a tax resident of UAE, there is no personal tax there. Correct. So in that case, that treaty will be. Treaty benefit will be there, yes. The case I am talking about, the tribunal decision of UAE only. एक दुबई है, एक सिंगापुर है. एक दुबई, एक सिंगापुर है. Thank you. Yeah. TRC should be there. Yes, in this case, the kind of declaration, if I get it, it's still a TRC regulation. So see, TRC is the base document. TRC is the base document. How do you determine that you are a resident of that country? TRC is issued by the government authorities. Only TNF is just to support your TRC because हर एक country का TRC का format अलग है. किसी में date है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ है. So therefore, for standardization, to support your TRC, they have given you this TNF. TNF cannot replace your TRC. Haji. That considered only in India, right? Correct. Now, there is an HUO who is investing in share market. Funds are coming from Karta NRO. Karta is non-resident India. So what is happening is that he's filing the return as a non-resident HUO. All the dividends which are coming because when they're registering with the stockbroker, they have no concept of it. So that is the resident only. So on dividend, everything is coming, they're coming at 10% TDS only. Correct. When I file the return, can I take 20% advantage? You can. Because you are not resident. See, it will be beneficial if my income is beyond that level. Beyond the slab rate. So I have got option both. Yes. I can either go for Yeah. or for that. Yes. Residency, yes, citizen, not having income from business, they are not subject. 34A is not fixed. This is not applicable. But it's a resident, but not ordinary resident, the department, they are not, they are maybe interested. Yeah. Are they correct? No. What You have to litigate. You have to argue. Chalo, quickly towards the last part, 15 CA CB will just quickly cover because I think this is also part of NR payments. So Form 15 CA, 15 CB now replaced by 145 and 146.
Nothing changes, only the form number changes. Everything remains the same. If the amount is exceeding 5 lakhs, I have to issue form 145 part B. 145 part B अगर अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, along with order of 395 which is 197 पहले लोअर विथहोल्डिंग है तो, या तो सीए सर्टिफिकेट, या तो पार्ट सी एंड सीए सर्टिफिकेट, या तो पार्ट सी एंड सीए सर्टिफिकेट. सीए सर्टिफिकेट इज नथिंग बट फॉर्म 146 जो 15C भी है. अगर 5 लाख से कम है तो ओनली पार्ट ए. 5 लाख से कम है तो ओनली पार्ट ए. अगर एग्जेम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल है देन 145 पार्ट डी. ओनली 145 पार्ट डी. अभी ये केसेस में बैंक आपके पास आएगा 145 पार्ट डी में भी कि हमको 146 चाहिए, नहीं तो हम रेमिटेंस नहीं करेगा. दे दो, फीस मिलेगा ना, दे दो. क्या करेंगे, बैंक रेमिटेंस ही नहीं करेगा उसके बिना. अभी कोई कोई बैंक ऐसा इंटरनेशनल है, उनको चाहिए ही चाहिए क्योंकि उनको वो कंफर्ट है 146 का कि बाबा सीए सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको समझता नहीं है कुछ. उनको ना आरबीआई समझता है ना इनकम टैक्स समझता है. उनको सिर्फ पेपर चाहिए, पेपर मिल गया तो वो रेमिटेंस कर देगा. उनको पता भी नहीं सोर्स कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या, कुछ नहीं. 146 मिल गया, वो आग बंद करके दाऊद को भी पेमेंट कर देगा. वैसा है कुछ बैंकों का, दे डोंट नो एनीथिंग. हाँ, यस यस यस, बट बैंक विल नॉट एग्री. बैंक को सब चाहिए. वो दे सकते हैं. हाँ नहीं, हाँ हाँ, तो वही उनका. सी टेक्निकली 145 and 146 is such that you are at the mercy of the bank. जो चाहिए वो दो. हाँ, उनको जो चाहिए वो दे दो, फीस ले लो, जो चाहिए वो दे दो, खत्म. So instead of already issuing the form 50 form, हाँ convince a couple of bankers, so I said, comfort certificate of a charge they don't. हाँ, but all banks will not agree. कुछ banks, some sensible banks will agree, but some banks like Bank of India, Bank of Baroda, हमको कुछ नहीं समझता है सब. हमारा 146 पाहिजे. हमको हेड ऑफिस से ऑर्डर है, उनका आंसर भी स्टैंडर्ड है. हमको सेंटर से इंस्ट्रक्शन है. सेंटर तो ऐसे बोलते हैं जैसे कैबिनेट से. हमको ऊपर से ऑर्डर है, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रोसीजर. रेमिटर है, सीए सर्टिफिकेट जरूरत है तो 146 लेगा, फिर 145 इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करेगा, फिर 145 का प्रिंट लेगा, फिर उसको 146 के साथ फॉर्म A2 के साथ देगा, फिर बैंक रेमिटेंस देगा, फिर बैंक सर्टिफिकेट ये जो है एओ को देगा, और फिर जाके कभी तो भी हमको फीस मिलेगी. हमारे पास तो सीओपी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. वी डोंट इशू एनी सर्टिफिकेट. ठीक है. की डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन, जस्ट अ चेकलिस्ट. यू कैन यूज दिस फॉर रेडी रेफरेंस. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, डराने का नहीं पर है तो है. टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा. टैक्स पेयर डीम टू बी असेस्ड इन डिफॉल्ट 40A में डिसअलाउंस होगा, नया सेक्शन 26(1)(f). सैलरी में 48(3) में डिसअलाउंस होगा, 26(1)(f). अदर सोर्सेज में 58(1) पहले होता था, अभी 95(1) है. पेनल्टी लगेगा 221 412, 271 अगेन 444 फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, 271C now 454 फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, 234E अगर फाइल नहीं किया टीडीएस रिटर्न 427, 271H now 461 फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट एक्सेट्रा. फिर ये भी है प्रोसिक्यूशन 276B 476 जेल. rigorous imprisonment is now reduced to normal imprisonment with 3 years maximum, ऐसा कुछ तो है. Quickly FEMA, almost my last slide. NRI NRO अकाउंट कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता, जस्ट रेडी चेकलिस्ट, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है. Am I allowed to have NRI account? Am I allowed to have NRO account? NRI से NRO में ट्रांसफर होगा नहीं होगा? So all this is covered here. NRI अकाउंट कौन खोल सकता है? Bank account in which NRI can deposit income generated from foreign sources only. Indian bank account और Indian rent income इसमें नहीं जा सकता. NRO अकाउंट में जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, जनरेटेड फ्रॉम इंडिया मतलब ये रेंटल इनकम एनआरओ में जाएगा, एनआरई में नहीं जाएगा. जॉइंट अकाउंट एनआरआई और इंडियन साथ में खोल सकता है.
ठीक है, 2 NRI ही साथ में खोल सकता है, इंडियन साथ में नहीं हो सकता जॉइंट अकाउंट। 2 NRI, हस्बैंड वाइफ बोथ NRI चलेगा, हस्बैंड NRI वाइफ इंडियन NRE नॉट पॉसिबल, NRO पॉसिबल। पब्लिक खोलता है प्रैक्टिकली, बट एज पर RBI it is not permissible, practically people are doing, again banks are not aware। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट होगा, विड्रॉवल INR में हो सकता है, यहां पे दोनों चलेगा, डिपॉजिट इन बोथ फॉरेन करेंसी एज वेल एज INR, विड्रॉवल इन INR। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। टैक्स इंप्लीकेशन, ये टैक्स फ्री है, ये टैक्सेबल है। फंड ट्रांसफर टू NRO पॉसिबल, टू NRE नॉट परमिटेड, इधर से इधर नहीं चलता, इधर से इधर चलेगा। रिपैट्रिएशन फ्रीली रिपैट्रिएबल, इधर इंटरेस्ट जाएगा और LRS में 1 मिलियन तक आप भेज सकते हो, उससे ज्यादा करना है कर सकते हो, बट विथ अप्रूवल ऑफ एडी बैंक और RBI। ठीक है, विदाउट लिमिट। मूवेबल एसेट्स 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, इमूवेबल एसेट 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, इसके ऊपर कर सकता हूं क्या? यस, विथ RBI अप्रूवल। ठीक है, कैन आई कन्वर्ट माई सेविंग टू NRE NRO? क्योंकि काफी बार क्या होता है, जब मैंने अकाउंट खोला था तब मैं रेसिडेंट था, फिर मैं बाहर चला गया, तो क्या सेम अकाउंट को मैं NRE NRO में कर सकता हूं? आंसर इज यस, आई कैन डू दैट। दिस इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इन्फॉर्म द बैंक, KYC वगैरह सब करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं किया तो यू आर इन कॉन्ट्रावेंशन, यू आर नॉन रेसिडेंट बट यू आर हैविंग अ नॉर्मल सेविंग अकाउंट। बहुत लोग नहीं करते, प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है, बट टेक्निकली यू आर इन ब्रीच। यस मैडम। गिफ्ट फ्रॉम अ रेसिडेंट इट विल गो टू NRO, नॉट अलाउड इन NRE। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट NRE में जा सकता है, इधर से उधर नहीं। तो बात ये आज के NRE में सोर्स ऑफ डिपॉजिट कब पूछते हैं? किसमें? NRE कभी फॉरेन से पैसा आता है। हाँ, कैसे अलग आती है सोर्स। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मांगता है वहां पे, क्योंकि उनको लगता है कि आपका दुबई में कनेक्शन। लेकिन See, they are not supposed to ask, but अभी तो ऐसा है ना, सोर्स नहीं, आगे चल के वो सोर्स का सोर्स भी मांगेगा। हाँ, NRO ठीक है। हाँ, Not in NRE account. they are not supposed to, but उनको कौन समझे? So yes, I think that's all. Key takeaways: need to be mindful while dealing with NRIs. They may not be, they are not aware of Indian laws. Even the Indian people are not aware of Indian laws. ठीक है, to tell you one live classic case of an Indian individual working in a multinational, very recent case study. 2 HRA क्लेम करता है, 2 प्रॉपर्टी का HRA क्लेम करता है, और 2 कैसा पता है? एक जिस घर में वो रहता है, दूसरा उसका शॉप है, शॉप का रेंट पे करता है, और दोनों HRA कंबाइन करके उसने क्लेम भी कर लिया, असेसमेंट में पकड़ा गया। अभी तो असेसमेंट और असेसिंग ऑफिसर आर वेरी, क्योंकि फॉर्म 16 में तो आया नहीं, तो क्लेम कर लिया, असेसिंग ऑफिसर में वो डर गया, और स्मार्ट है, अभी तक CA को अपॉइंट नहीं किया, वो लगता है कि मैं एक्सेप्ट कर लेगा तो मेरे को कुछ होगा नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा चलो अच्छा इसने टैक्स भर दिया तो छोड़ दो, माफ कर दो। लॉजिक अप्लाई करता है, लॉ में लॉजिक नहीं होता है, लॉ इज लॉ। तो भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, रिप्लाई टू 142(1), इट वाज माय मिस्टेक, इट इज माय रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनली 1, बट बाय मिस्टेक आई क्लेम 2, ऐसा करके उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफिसर ने एडिशन कर दिया, मिस रिपोर्टिंग लगा दिया, 200% पेनल्टी। इज दिस अ मिस रिपोर्टिंग? यस, it is a misreporting. Now under the new law, any unreported income is misreporting. Very clear. Income tax नए वाले में clearly सेक्शन में ही लिखा है, any undisclosed income is misreporting. तो misreporting लगा लिया, तब जाके बंदा उसके CA के पास गया, मैं उसका CA नहीं है, अभी वो उसका CA उसका दोस्त है, बोला ये मेरे को तो फीस देगा नहीं, तो बोलता है अभी CA और लिटिगेशन कांपने लगा, सब CA तो करते नहीं, तो वो मेरे पास आया कि भाई देख ऐसा ऐसा केस है, कुछ हो सकता है क्या? मतलब भाई प्राइमा फेसी तो ये
ओपन एंड शट कैसे कुछ नहीं हो सकता, पर तू मेरे को नोटिस भेज, असेसमेंट ऑर्डर भेज, मैं देखता हूँ। फॉर्चुनेटली उसका नसीब इतना अच्छा, असेसमेंट ऑर्डर में कहीं पे भी इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी गलती हो गया फेसलेस वाले का, पहला गलती। दूसरा गलती, जब पेनल्टी का नोटिस भेजा उसमें मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग लिखा नहीं। हाँ हाँ वही, वो लिम लिखना, कुछ लिखा ही नहीं। बोला भाई बच गया तेरा क्लाइंट, पैसा लेना, फीस चाहिए तो ये अपन डिफेंड करेगा। सीआईटी अपील में निकल गया, सीआईटी अपील में निकल दिया। सीआईटी अपील मानता नहीं है प्रैक्टिकली, ये केस में सीआईटी अपील में निकल गया। नसीब देखो उसका कितना अच्छा। आई होप दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो बच गया। डिलीट कर देना एडिट में, हम यूट्यूब वाले हम एडिट कर देते। तो द पॉइंट इज, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब वही ऑटोमेशन के चक्कर में वो सारा, मतलब काफी सारे चीजें उनसे मिस हो। अभी तो और होगा नए लॉ में, उनका सिस्टम अभी भी पुराना है। आईटीपी अपडेट करने को, ये करने को बहुत टाइम लगेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर का हेडेक आपको पता नहीं, उनको 4 सिस्टम हैंडल करना है। आईटीबी है, सीपीसी है, सीपीसी 2.0 है, और एक और पुराना है। बोलते हमको ही नहीं पता किधर क्या है डेटा। उनका तकलीफ अलग है, उसमें ऐसे सब गलती होता है। हाँ तो 51 गया, डायरेक्ट 200% नहीं, आपने कोई रिपोर्ट नहीं किया अभी, ऐसा अनरिपोर्टेड इनकम ऐसा लिखा है। अंडर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग, अनरिपोर्टेड। अंडर रिपोर्टिंग है तो 50% है, दैट इज स्टिल देयर, बट टेक्निकली बिकॉज ऑफ दिस डिपार्टमेंट तो सब केस में 200 ही लगाए, तो फिर अपना मारामारी चालू रहेगा, 50 वर्सेस 200, वो लिटिगेशन जिंदा रहेगा, अपना रोजी रोटी चलेगा। Yes, that's all. I think we have had questions, but still, if anyone has more questions, and if we have time, otherwise, good to go. हाँ जी, done. चलो, thank you very much. हाँ. Thank you, Vyomessh. Thank you for taking your time for preparation of such 90 plus slides for us and covering all the slides. That is more important. And after taking all the question answers, so I get to know his other interest. I mean, this Rudraksh and numerology. So definitely we are going to have one more session from him. I have requested him until I am curious to know the soft skill topics. So we will cover in soft skill and some when there are some lead to do. So we'll invite him. Insider information we get CP more than. Yes, sir. Only done. That is not a challenge. That we know how to get that. Even if we do singing programs, we will do common coordinations, common empowerment program. So I invite our deputy Bhai to give a formal word of thanks. It is my privilege to put a vote of thanks for Vyomessh Bhai. Basically, he has explained it in a very interactive session with means so much slides he has shown us. So we will carry out with a loud applause. It is very nice to have Vyomessh Bhai as a speaker. Thanks. One more thing, I mean, just I have a separate young coordinator group, so I keep on resupplying that group. So acting and adding value to our profession. I am keeping those persons only. So I am really doing not responsible, giving any response, not attending any of the session, not replying any message, not physically available. So I am looking those persons and adding on. So I mean, any freshers, new girls, whosoever it is. Generally, it's no generalized here. So I mean, happy to add members who want to be active and want to be moved and how to take it forward. So happy to add those 2, 3 members. It's also newcomers. So feel free to your person.
Thank you. Not